So children, we were studying the methods of preparation of aldehydes and ketones. So we studied two methods. One is the oxidation by the oxidation of 1 degree and 2 degree alcohols. And second method we studied, that is by dehydrogenation of again 1 degree and 2 degree alcohols. Now we are coming to a very important name reaction which is used for preparing aldehydes, that is Rosenmund's reduction. Rosenmund's reduction. Rosenmund's reduction is used for preparing aldehydes. By the reduction, it involves the reduction of acid chloride with hydrogen in presence of palladium supported over barium sulfate, and the catalyst is partially poisoned by your quinoline or sulfur. तो हम क्या करते हैं रोजनमंड्स रिडक्शन में एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं और कैसे करते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. लेट अस सी, कोई भी हम एसिड क्लोराइड ले, लाइक सपोज करो RCOCl. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड क्लोराइड. इसको हम जब हाइड्रोजन से रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम supported over barium sulfate and partially poisoned by quinoline or sulfur, then what do we get? RCHO plus HCl. Why this partial poisoning is done? It is because to prevent the further reduction of aldehyde to alcohol. अगर हम इसको पॉइजन नहीं करेंगे, पॉइजन का मतलब क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग, यू कैन से डिक्रीजिंग द कैटालिटिक ability, catalytic property of any catalyst. So it is partially poisoned just to prevent the reduction of aldehyde to alcohol. All right. So acid chloride के रिडक्शन से हमें RCH, जैसे सपोज करो हमने एसिटाइल क्लोराइड लिया है CH3COCl. दिस इज एसिटाइल क्लोराइड. The IUPAC name is ethanoyl chloride. Okay, when it is treated with hydrogen in presence of palladium, barium sulfate and quinoline or sulfur, then we get CH3CHO plus HCl. Mind it, this method cannot be used for preparing ketone. This method is specifically for aldehyde, not ketone. For preparing ketone, what do? We take acid chloride and treat it with dialkyl cadmium. एसिड क्लोराइड को हम डाइअल्काइल कैडमियम से ट्रीट करते हैं. ऑलराइट, लेट मी क्लीन द बोर्ड. Acid chloride is treated with dialkyl cadmium, RCOCl plus suppose करो CdR2 dash. Suppose this R is different from this R, then what do we get? RCO R dash, ये R and ये R, they both will be there in the ketone, plus CdCl2. All right, suppose we have taken CH3COCl, we have taken acetyl chloride and treated with diethyl cadmium. Then what we will be getting? CH3CO C2H5. So see, you are preparing an unsymmetric ketone plus CdCl2. So this is used for preparing ketone. Now next method,
I think there is no doubt in this. Next method, we are going to study the preparation of aldehydes and ketones. That is a very old method by dry distillation of calcium salts of fatty acids, carboxylic acids, dry distillation. I'm cleaning the board. Next method, by dry distillation of calcium salts of fatty acids. When calcium salts of fatty acids is heated strongly, then it forms aldehyde or ketone as the case may be. Let us see. कैल्शियम सॉल्ट को हम कैसे लिखते हैं? RCOO होल ट्वाइस Ca. कैल्शियम इज डाइवेलेंट, सो एसीटेट आयन के दो इन आयन से वो ये कंबाइन करेगा, RCOO होल ट्वाइस Ca. सो इफ अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड. द फॉर्मेल्डिहाइड के लिए हम फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को लेंगे. वी विल बी टेकिंग कैल्शियम फॉर्मेट, only calcium formate, and heat it. Calcium formate, how will we write? HC double O H C double O twice Ca. This is calcium formate. HC double O HC double O twice Ca. All right. When it is heated, then what do we see? This part comes out in form of HCHO plus calcium carbonate is the side product. So formaldehyde is prepared just by heating calcium formate alone, and any other higher aldehyde can be obtained by heating a mixture of calcium formate or calcium formate plus any other higher salt of calcium, salt of fatty acid with calcium. मतलब कि अगर हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो हमें केवल कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करना है, मगर अगर हमें हायर एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो हमें मिक्सचर लेंगे हम. एक तो एसेंशियली कैल्शियम फॉर्मेट होगा एंड दूसरा होगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एनी अदर कार्बोक्सिलिक एसिड. एज फॉर एग्जांपल, सपोज हम कैल्शियम फॉर्मेट, वी आर टेकिंग कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट एंड हीटिंग देम टुगेदर, देन व्हाट वुड हैपन? First, we will be taking calcium formate, HC double bond O Ca, plus we will be taking some other calcium acetate मैंने कहा था, CO CH3 CO CH3 CH3 C double O CH3 C double O, calcium acetate, this is calcium acetate. All right, so what happens on heating dry distillation? This calcium formate, it will provide you CHO group in this way, and this will give you CH3, and rest part will join to form calcium carbonate. So we get 2 moles of CH3 CHO plus CaCO3. If you want to prepare some other aldehyde, higher homologue, then you change